Hello friends, all the students. Today I am going to discuss with you the small scale industries. This is the fourth unit, part of fourth unit, entrepreneurship and small business management. तो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इनको समझना जरूरी है बिफोर डिस्कसिंग द सपोर्ट फॉर एसएसआई एंड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स, थिकनेस ऑफ द एसएसआई इन इंडिया एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स etc. There are different topics which we will cover in particular units. So small scale industries in India, basically there are some things, definition, characteristics and objectives. First of all we discuss like in India economic अगर हम बात करते हैं economically, तो small scale and quarter industries are occupied an important place where of their employment potential and their contribution to the total industrial output and exports. And Government of India has taken a number of steps to promote them. However, with the recent measures, small scale industries, cottage industries, and facing both internal competition as well as the external competition with the large scale industries and etc. So there are different kinds of problems also facing by the small scale industries and other things, but in Government of India has taken number of steps to promote them, like Skill India, Step India, Mudra Loan, etc. There are different kinds of things which promoted by the Government of India, and there is no clear distinction between SSI and cottage industry basically, but however it is generally believed that cottage industry is one which is carried out on only or primarily with the help of members of family. तो बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो फैमिली मेंबर्स या स्मॉल स्केल पर जो हम जो है करते हैं. एंड एज अगेन small industries are employs hired labor etc. Moreover, industries are generally associated with the agriculture and provide subsidies employment in rural areas also. So there are different kinds of industries. So small scale industries, cottage industries, agriculture related industries, and subsidies industries which are depends upon the other industries, and as against these small scale industries are mainly located in urban areas and as separated established. So on the basis of the discussion there are different definitions also to understand the different terms like small scale industries, ancillary industries, tiny industries, small scale service establishment, household industries, ownership, management and control. So there are different hints on the basis of these terms or on the basis of these technical terms we discuss like small scale industries. This is the first term. In small scale industries is basically the undertaking which have fixed investment in the plant and machinery, and whether held on the ownership basis or lease basis or hire base purchase basis not exceeding of ₹1 crore. तो ऐसी इंडस्ट्री जिसका टर्नओवर हो या इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी जिसको हम कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और ऑन द ओनरशिप बेसिस या और लीजेस बेसिस या और हायर परचेज बेसिस, किसी में भी हो सकता है, बट इट इज नॉट exceeding the ₹1 crore. So that kind of industries are known as small scale industries. Ancillary industries are those industries which are having fixed investment in plant and machinery not exceeding the ₹1 crore engaged in or proposed to engage in. किन किन चीजों में हो सकते हैं? Basically they are the manufacturing of parts, components, sub assemblies, toolings or intermediaries terms and the rendering of services supplying of 30% of their production or the services as case may be, or to other units or for production of other articles also. So this kind of industries are known as ancillary industries which are supporting industries, or I think they provide the raw materials etc. like
other things. तो ancillary industries like parts हैं, component हैं, sub assemblies हैं, toolings हैं, या other production of other articles, 30% of their production or services as case may be, etc. They're supplying to rendering those services also. Tiny industries या tiny industries हम इनको कह सकते हैं. तो refers to undertake having fixed investment in plant and machinery not exceeding of rupees 23 lakhs. And these also include undertaking providing services as laundry and xeroxing, repairs and maintenance of customer equipment and machinery, hatching and poultry farm, etc. तो located in towns with population less than 50,000. ऐसे एरिया में जिनका जो टाउन्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 50,000 है और जिनका जो इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी इट इज नॉट एक्सीडिंग ऑफ ₹23 lakhs or according to the government rules which में भी चेंज एक्सेट्रा जो भी इनकी अकॉर्डिंगली आती है उसके हिसाब से भी हम इनको देख सकते हैं बाहर. तो स्मॉल अनदर वन इज स्मॉल स्केल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट. स्मॉल स्केल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली दीज main enterprises engage in personal or household services in rural areas and town with the population not exceeding 50,000 and having fixed investment in plant and machinery not exceeding of ₹25 lakhs. ऐसी इंडस्ट्री जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 50,000 ऑफ द टाउन अगर हम बात करें तो दे आर एंगेज इन पर्सनल हाउस होल्ड सर्विसेज तो नोन एज स्मॉल स्केल सर्विस एस्टेब्लिशमेंट. अनदर इज हाउस होल्ड इंडस्ट्री. दिस इज द फिफ्थ वन. Household industries are the industries. These covers the artisans, skilled craftsmen, technicians who can work in their own houses if their work requires less than 300 square feet space and less than 1 kilowatt power and less than 5 workers and no पॉपुलेशन इज कोस्ट. यहाँ पर उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा था. लाइक हैंडीक्राफ्ट, टॉयज, डोल्स, स्मॉल प्लास्टिक एंड पेपर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल्स गैजेट्स, सम एग्जांपल्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. एंड तो इस टाइप की इंडस्ट्री जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो एक अपने घर से ही कोई आम आदमी एक बिजनेसमैन छोटा सा अपने घर से 1300 स्क्वायर फीट जगह में भी अपनी छोटी सी इंडस्ट्री को चला सकता है. और इलेक्ट्रिसिटी पावर की बात करें तो 1 किलोवाट पावर और वर्कर भी आपको लेस देन 5 वर्कर के साथ आप इस इंडस्ट्री को चला सकते हैं. आप इसमें टॉल इंडस्ट्रीज हैं, डॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, बॉल हो गया, बैट्स, जो बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं उस टाइप की चीज़ें. या आप इसमें कैंडल भी इंडस्ट्रीज को भी जोड़ सकते हैं जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं अपने घर से चलाया जा सकते हैं. तो नाउ दीज आर द सम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री. Now we discuss the characteristics of small scale industries. There are various characteristics. The first one is ownership. On the basis of ownership, we can say that small scale industries or units is with one individual or in sole proprietorship, or it can be with a few individual in partnership also. जरूरी नहीं है अकेला व्यक्ति सॉल एंटरप्राइजेस भी हम इनको कह सकते हैं. समटाइम्स इंडिविजुअल पर्सन या 1-2 लोग मिलकर 3 लोग मिलकर कई बार छोटी सी इंडस्ट्री चला सकते हैं. सेकेंड वन इज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नॉर्मली हैविंग द सिंगल मैन और 1 मैन आर्मी. तो दैट्स वाई इन मोस्ट केसेस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल it took in their hands and there is no interfere of others to managing and controlling the things. So these units are managed in the personalized fashions and the owner is actively involved in all the decisions concerning the business also, and that's why it is managed and controlled by a single person. In cases of partnership sometimes there is a concerned, otherwise there is no concern of other peoples. Third one is area of operation की बात हम करते हैं. तो area of operation basically in small scale industries it is localized catering to the local or regional demands. तो basically ऐसी industries जो
एरिया ऑफ ऑपरेशन जो लोकल डिमांड को ध्यान में रखते हुए भी हम तैयार कर सकते हैं. ओवरऑल रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लिमिटेड एंड रिजल्ट ऑफ दैट इट इज फोर्स्ड टू कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी टू द लोकल लेवल्स. एंड फोर्थ इज टेक्नोलॉजी. तो जो टेक्नोलॉजीज हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली वर्क विद लेबर इंटेंसिव और जिसको फेयरली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं कंपैरेटिवली स्मॉलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात होती है एंड अदर देन द लार्जर इंडस्ट्रीज. So there is a these units are more suited for the economical where capital is scarce and there is abundant supply of labors etc. So if labor supply is scarce or there is a lack of finance और capital etc. तो टेक्नोलॉजीज जो है यहाँ इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है. तो टेक्नोलॉजीज कम होती हैं या टेक्नो फ्रेंडली कम होती है. लेबर इंटेंसिव ज़्यादा इस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर लेबर को ज़्यादा हम यूज करते हैं. जेस्टेशन पीरियड, दिस इज अनदर मेन कैरेक्टरिस्टिक. जेस्टेशन पीरियड इज दैट पीरियड आफ्टर विच द थिंग problems are over and return on the investment starts. And gestation period of a small scale units is less as compared to the large scale industries. तो बेसिकली छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज में तो जेस्टेशन पीरियड कम होता है. क्यों? बिकॉज देर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देर इज ए स्मॉल फिक्स्ड असेट्स एंड एक्सेट्रा. तो आफ्टर सम टाइम्स दे रिटर्न देयर preliminary investment and etc. and then go easily compared to large scale industries. So that's why we can say gestation period is small in small scale industry. Flexibility, this is another characteristic. Small scale units are compared to large scale units and are more change susceptible and highly reactive and responsive to the socio-economic condition also. So there is a flexibility and they are more flexible to adapt the changes like new method of production, introduction of new product etc. तो बेसिकली छोटी इंडस्ट्री होती है जो भी मार्केट में डिमांड होती है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. और इन कंपेरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो यूनिट्स आर मोर चेंज सस्पिटेबल एंड हाईली रिएक्टिव and responsive to social economical condition also. तो ये कहा जा सकता है इस इंडस्ट्रीज को. Another is resources. Small scale industries basically use local and indigenous resources and as such can be located anywhere subject to the availability of these resources like labor and raw material. Basically labor and raw materials की availabilities पर ही ये industries based होती हैं और उनको हम जो है उन्हीं के बेसिस पर हम उनको स्टेब्लिश करते हैं. डिस्पर्सल ऑफ यूनिट्स. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और यूनिट्स आर यूज लोकल रिसोर्सेज एंड कैन बी डिस्पर्स्ड ओवर ए वाइड टेरिटरीज. लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और एक वाइड टेरिटरीज में वो अपना बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हैं. एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केल SSIs in rural and backward areas also promote more balanced regional development and that can be prevent influence of job seekers and rural areas from the rural areas or cities areas to cities etc. So if the SSI units in town or in small cities and etc. they also able to provide that job opportunity for the rural areas job seekers and overall. So these are some characteristics of small scale units and objectives of small scale industries. अगर हम बात करें तो basically there are lots of objectives. They are helpful to create more employment opportunities with less investment. तो ये कहा जा सकता है कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अच्छा जो है टर्म ये प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं. टू रिमूव इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस ऑफ रूरल एंड लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द कंपनी. दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव फॉर SSI. तो बेसिकली जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड रूरल एरियाज या बैकवर्ड एरियाज हम इनको कह सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, तो लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द इकोनॉमी भी होते हैं. तो इनको रिमूव कर सकते हैं, उनमें हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे बैलेंस ऑफ इकोनॉमी और ज़्यादातर लोगों को काम करने का सही जो है एक सिस्टम जो है वहाँ डेवलप हो सकता है, इकोनॉमिकल डेवलप होता है जिससे बैलेंस ऑफ इकोनॉमी आती है. या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली सब जगह रीजन
जो है डेवलप किया है। थर्ड वन इज टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस, तो जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंसेस को देखो जहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है इन कंपेरिजन ऑफ जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर हम ज़्यादातर छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं तो रीजनल इम्बैलेंसेस भी यहाँ पर कम हो जाता है। टू मोबिलाइज एंड इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, तो ऐसे जो है दे मोबिलाइज एंड इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर ये भी हम देखते हैं कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली दे आर हेल्पफुल टू मोबिलाइज एंड इंश्योरिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज को भी ये मोबिलाइज करने में हेल्पफुल होता है। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल्स, बेसिकली दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर वेयर द स्मॉल इंडस्ट्रीज आर देयर established and they are formed, and the workers of the particular rural areas, job seekers, they work in them, then the living standard of the particular peoples are improved. So this is an important factor to ensure equitability distribution of income and wealth. So with the help of industry, small scale industry, we ensure that the equitable distribution of income and wealth. So basically in rural areas there are some most of the agricultural person, farmers and etc. If and about 60 to 70% are laborers and workers. If there is any industries, small scale industries, and they have the work for their improvement of the living standard, for the incomes, etc. Seventh point is to solve unemployment problems also. So small scale industries also able to solve the problems of unemployment in the rural areas and other areas, and to attain self-reliance. This is another important thing कि self-reliance आपके अंदर एक अपनी एक पहचान, एक अपनी एक जो है कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होता है, रिलायंस भी आपके अंदर क्रिएट होता है। तो अटेंड करते हैं लोग जिनको इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, और आप एक एम्प्लॉय के साथ से एम्प्लॉयर भी आप क्रिएट होते हैं। तो एम्प्लॉयर जब आप आते हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण आप अपने आप को एक अच्छा सा पोजीशन में जो है सोसाइटी में आपकी जगह होती है। तो अडॉप्ट, नाइन्थ पॉइंट इज टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एम्ड एट प्रोड्यूसिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एम्ड। तो बेसिकली छोटी इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं अगर इनको ज़रूरत होती है, अदरवाइज लेबर इंटेंसिव तो ये होती हैं, और स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत होती है तो उनको ये ट्रेंड करते हैं, और क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए लोअर कॉस्ट भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द सम पॉइंट्स विच आर डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ